Hello everyone, you are watching my YouTube channel समर इंग्लिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके आप टिक लगा लीजिए एंड टेक आउट योर रेड पेन एंड ब्लू पेन फास्ट एंड वी विल सी द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैंने इसमें जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं उनको रेड से टिक मार्क कर दिया है एंड जो ब्लू से टिक मार्क कर दिया है वो सेकंड नंबर पे आईएमपी है। मतलब पहले आपको रेड टिक वाले जो हैं उनको क्लियर कर लेना है, उसके बाद में ब्लू टिक वाले भी आप कर सकते हैं। एंड आप एंड ये आपकी जो है साइंस की लेटेस्ट बुक जो है बिल्कुल 2025 2025 और 26 की जो है उसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टिक आपको लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन से अपने। उसके पहले इंडेक्स देख लेते हैं ना। लेटेस्ट बुक है, सबके पास में होगी लेटेस्ट बुक, कोई बात नहीं है, 1 ईयर अगर ओल्ड भी है तो। इसके साथ में सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड इफ़ यू वांट अदर सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो। अगर आपको अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, इंग्लिश की ग्रामर चाहिए, तो चैनल पर विजिट करिए आप। चलिए देखते हैं आगे। फुल चैप्टर देख लेते हैं पूरे कितने हैं आपके इसमें। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 13 तक है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 1 देखते हैं और चैप्टर 1 में कौन कौन से जो हैं आपके इम्पोर्टेंट टिक्स हैं। चैप्टर्स में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ में थोड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। ओके, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसी के साथ में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड से टिक लगाया है, इसको आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इन रिएक्शंस को भी आपको करना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जो थोड़ा उनकी लर्निंग पावर कम है तो वो पहले जो रेड से टिक हैं उनको मेन तरीके से एकदम से पक्का कर लें उसको, है ना। चलिए और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके। ये टॉपिक था आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने समझा होगा, है ना। इसी के साथ में हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बुक सेम ही है, बुक से पेज नंबर मिला के क्वेश्चन नंबर मिला के आप भी टिक लगा सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए आगे के, क्योंकि कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक में से बिल्कुल बाहर नहीं होता, है ना। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको आपको कर लिया है आपने तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। मेरे आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, जैसे कोरोजन है, आपका रेंसिडिटी है। चलिए इसमें अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बन रहे हैं आपके। रेड वाले जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले तो उन्हें करना ही चाहिए। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इनको कर लीजिएगा। ओके, 2025 एंड 26 की लेटेस्ट बुक है ये आपकी। इसके बाद में ये ऑब्जेक्टिव है ना, ऑप्शन वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, Fe2O3 प्लस 2Al एंड Al2O3 प्लस 2Fe। इसमें ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सी रिएक्शन है ये वाली। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर।
ठीक है, इसके बाद में वो ऑब्जेक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ब्लू से ट्रिक है, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस आपकी आ सकती हैं केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए आपकी। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर जो 7 8 नंबर क्वेश्चन में ये वाली इक्वेशंस आ सकती हैं आपकी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, है ना, और आपका क्या बनता है इससे, हाइड्रोजन क्लोराइड। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, व्हाई डज वन मीन बाय एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसी मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे वीडियो पे आपको मिल जाएंगे, समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल पे, उस पर आप विजिट करिए। मैथ्स के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 15 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय precipitation reaction, explain by giving example। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स, इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मैंने आपको पहले बताया था ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, एंड 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लस्ड विद नाइट्रोजन, वाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ईच, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, है ना। समर इंग्लिश वर्ल्ड, प्रेस द बेल आइकन एंड गॉट द नोटिफिकेशन। ओके, इसके बाद में हम आते हैं सेकंड अपने चैप्टर पर। नाउ वी विल सी द सेकंड चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, अभी मैं पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हमको मेन एग्जाम के लिए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है। ओके, टॉपिक था हमारा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उसके बाद में हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट, व्हाई शुड कर्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। और इसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन जो है ब्लू से लगा हुआ है टिक। इसके बाद में आप जो फर्स्ट वाला तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड देख लीजिएगा। इसमें विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। टॉपिक है आपका वो, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। What happens to an acid or a base in a water solution? इसके बाद देखते हैं, यस ये है आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद में है, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O प्लस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। फिर है इसके बाद में, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर है इसमें टॉपिक आपका, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशंस। ये आपका पीएच स्केल है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये जो ब्लू से, ये जो रेड से टिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वियस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। और इसके बाद में आपको इनको भी कर लेना है, यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B, द pH ऑफ सॉल्यूशन A is 6 and pH ऑफ सॉल्यूशन B is 8, which solution has more hydrogen ion concentration, which of this is acidic and which one is basic। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस
aqueous ions? If yes, then why are these basic? More about salts, family of salts, pH of salts, chemical from common salt, bleaching powder. Bleaching powder is used, baking soda, usage of baking soda, washing soda. और देखते हैं नीचे कौन से आपके बन रहे हैं। हाँ, यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका नेम द सब्सटेंसेस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद में नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। और है इसमें आपका व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। फिर फिफ्थ वाला इसमें राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन विथ बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। इसके बाद में आपका ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अ सोडियम टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। इसके बाद में आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। और उसके बाद में ये क्वेश्चन है, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रेश मिल्क हैज द पीएच ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं नीचे, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स। और भी है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3। अब लगाएंगे चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ देख लेते हैं हम आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बन रहे हैं। नॉन मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच is a liquid at room temperature, can be easily cut with a knife, is the best conductor of heat and is a poor conductor of heat। ओके, इनके एग्जांपल्स देना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, how do metals react with solution of other metal salts, the reactivity series क्वेश्चंस। हाँ यस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। इसके बाद में ये बन रहा है आपका, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। एंड टू क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट, which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal, write the chemical reaction when iron reacts with dilute hydrogen sulfate। Okay, and question number 5, what would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate, write the chemical reaction that takes place। फिर टॉपिक है आपका, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। यस, यहाँ पे टिक लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। फिर क्वेश्चन है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O and MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। फिर आपका टॉपिक था इसमें ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, स्पेशली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ट्रिक लगाने हैं, इनरिचमेंट ऑफ ऑर्स, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। यस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल, और एंड गैंग, इसमें से क्वेश्चन बनता है, आता है। नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। और इसी के साथ में एक और है आपका, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। कोरोजन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको तैयार कर लीजिएगा।
इस पे क्वेश्चन बनेगा, नीचे देख लेते हैं हम। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, देखिए द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन, इसके बाद में है ये आपका मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग स्टेट मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है विच मेटल्स डू नॉट corrode easily एंड व्हाट आर alloys। ये ऑब्जेक्टिव जो हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सेकंड है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज suitable फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके ऑप्शंस में, है ना, चूज द करेक्ट में। एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो soluble इन वाटर, द एलिमेंट इज likely to be। फोर्थ है फूड cans are coated with tin and not with zinc because। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इंपॉर्टेंट, व्हाट आर amphoteric oxides, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ amphoteric oxides। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इंपॉर्टेंट बन रहा है इसमें, स्टेट टू वेज ऑफ टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन। गिव रीजंस में है इसमें आपका, फर्स्ट है प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। बी है सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। और सी है आपका, इसमें क्वेश्चन और बन रहा है, एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल यट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विथ लेमन और टैमरिंड जूस, एक्सप्लेन व्हाई दीज सॉर्ट सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड। इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड। Now we will see the chapter number 4, carbon and its compounds, important questions and important topic. Bonding in carbon, the covalent bond. Allotropes of carbon. Questions. This question is very important. What would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2? Versatile nature of carbon. Organic compounds, saturated and unsaturated carbon compounds, chains, branches and rings, methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane. Will you be my friend? Homologous series, nomenclature of carbon compounds, alloalkane, alcohol, aldehyde, ketone, carboxylic acid. This is the important question. What are the two properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us? Question number 4. Draw the structures for the following compounds: ethanoic acid, bromopentane, butane, butanol, and hexanol. Okay. Chemical properties of carbon compounds: combustion. Why do substances burn with or without a flame? Formation of coal and petroleum. Oxidation. Important topic, very, very. Addition reactions, substitution reaction. Question, important question. Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction? How do alcohol affect living beings? Alcohol as a fuel, properties of ethanoic acid, reaction of ethanoic acid. Question, yes, how would you distinguish experimentally between an alcohol and carboxylic acid? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन रहा है, व्हाई व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फिर और टॉपिक था क्या था आपका, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स।
Question number first, would you be able to check if water is hard by using a detergent? और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका इंपॉर्टेंट ये भी बन रहा है, पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लॉथ, यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लॉथ ऑन अ स्टोन और बीट इट विद अ पैडल, scrub with a brush, or the mixture is agitated in a washing machine. Why is agitation necessary to get clean clothes? एक्सरसाइज में ये आपके ऑब्जेक्टिव्स, ईथेन with the molecular formula C2H6 has. Butanol is a 4 carbon compound with the functional group. Yes, most important, while cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that. फिफ्थ का जो है आपका ए वाला जो है इंपॉर्टेंट है, एथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनॉन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज एन होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेड वाले जो है हमें सबसे पहले करना है। हाउ कैन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। Question number 10, explain the formation of scum when hard water is treated with soap. Question number 11 important है, what change will you observe if you test soap with litmus paper, red and blue? Question number 12, what is hydrogenation? What is its industrial application? Question number 14 पे है, give a test that can be used to differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons. Question number 15, very important, explain the mechanism of the cleaning action of soaps. Now we will see the important questions of chapter number 5. Our chapter number 5 is life process. बायोलॉजी का चैप्टर है, अभी जो चैप्टर आपके हो गए थे वो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर थे। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? यस, नाउ टिक मार्क द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements to multicellular organisms like humans? Question number 2 है, what criteria do we use to decide whether something is alive? Very important है. What are outside raw materials used for by an organism? And fourth है आपका बहुत ही important, what processes would you consider essential for maintaining life? Topic आपका nutrition, how do living things get their food, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, how do organisms obtain their nutrition, nutrition in human beings. Important diagram है स्टूडेंट्स, बनाइएगा इसको, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, dental caries. Yes, these are the very important questions. What are the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? Question number 2 है, where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? थर्ड है इसमें, what is the role of the acids in our stomach? फोर्थ है, what is the function of digestive enzymes? फिफ्थ है आपका, how is the small intestine designed to absorb digested food? टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में देखते हैं आगे और एटीपी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? Question number 3 है, how is oxygen and carbon dioxide transported in human beings? टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन, our pump, the heart, very important diagram. Oxygen enters the blood in the lungs, blood pressure, the tube blood vessels, maintenance by platelets, lymph, transportation in plants, transport of water, transport of food and other substances.
Questions, yes, important questions. What are the components of the transport system in human beings? What are the functions of these components? Second इसमें, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in the mammals and birds? Question number 4 है, how are water and minerals transported in plants? Very important questions. और important question है इसका, how is food transported in plants? Excretion. स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम स्टूडेंट्स, करिएगा इसको. आर्टिफिशियल किडनी, हेमोडायलिसिस, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ऑर्गन डोनेशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है आपका, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसका स्ट्रक्चर बनाना मैंने बताया था आपको पहले ही. एंड दूसरे अदर क्वेश्चन हैं. The other important questions are, what are the methods used by plants to get rid of excretory products? Question number 3 है, how is the amount of urine produced regulated? Now we will see the next important questions. Important objectives हैं आपके ये. फर्स्ट वाला है, the kidneys in human beings are a part of the system 4. Second है, the xylem in plants are responsible for. Question number 3 है, the autotrophic mode of nutrition requires. Question number 4, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in. Question number 5 है इसमें, how are fats digested in our bodies, where does this process takes place? Important question है बहुत. Question number 6 है, what is the role of saliva in the digestion of food? Question number 7, what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts? Question number 8, important question, what are the differences between aerobic and anaerobic respiration? Name some organism that used the anaerobic mode of respiration. Question number 10, important है आपका, what would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our bodies? Question number 12, important question, what are the differences between the transport of materials in xylem and phloem? The next chapter, important question we will see. Our next chapter is control and coordination, chapter number 6. Animals, nervous system. It is very important diagram, student. Structure of neuron and neuromuscular junction. What happens in reflex actions? Reflex arc, important है ये भी diagram. Human brain, ये diagram भी important है आपका, है ना. How are these tissues protected? How does the nervous tissue cause actions? Important questions. Students, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस वीडियो को फ़ायदा ले सकते हैं. आप पेज नंबर के हिसाब से क्वेश्चन को मिलाइए और उसमें टिक मार्क लगा लीजिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती? इंसेंस स्टिक. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. छुमी का पौधा होता है ये, सेंसिटिव प्लांट होता है. मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ. Important questions. What are plant hormones? Very important question. How is the movement of leaves of the sensitive plant different from the movement of a shoot towards light? Question number 3, very important. Give an example of a plant hormone that promotes growth. Hormones in plants. Questions, important questions. How does chemical coordination take place in animals? Question number 2 is very important. Why is the use of iodized salt advisable? And question number 4, what are some patients of diabetes treated by giving injections of insulin?
Important objective, which of the following is a plant hormone? Second, the gap between two neurons is called a. Question number 3, the brain is responsible for. Question number 4, what are the. Question number 4 नहीं है, question number 5. Question number 5, draw the structure of neuron and explain its function. How does phototropism occur in plants? Question number 8 है, how does chemical coordination occur in plants? Question number 9, what is the need for a system of control and coordination in an organism? Very important question. Question number 10, how are involuntary actions and reflex action different from each other? And question number 12, what is the difference between the manner in which movement takes place in a sensitive plant and the movement in our legs? Now we will see the chapter number 7's important question. Chapter number 7, how do organisms reproduce? Related to biology chapter. Do organisms create exact copies of themselves? ये topics हैं. The importance of variations. Yes, important question. What is the importance of DNA copying in reproduction? And why is variation beneficial to the species but not necessarily for the individual? Modes of reproduction used by single organism. टॉपिक है ये आपका फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर, स्पोर फॉर्मेशन. Yes, important question. How does binary fission differ from multiple fission? Question number 2 है, how will an organism be benefited if it reproduces through spores? Question number 3 important है, can you think of reason why more complex organism cannot give rise to new individual through regeneration? Question number 4 important है, why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? Question number 5 is also important, why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? Sexual reproduction, why the sexual mode of reproduction? Sexual reproduction in flowering plants. Reproduction in human beings. Male reproductive system, female reproductive system. What happens when the egg is not fertilized? Reproductive health. Yes, important questions. How is the process of pollination different from fertilization? Question number 2 है, what is the role of the seminal vessels and the prostate gland? Question number 3 है, what are the changes seen in girls at the time of puberty? Question number 4 है, how does the embryo get nourishment inside the mother's body? The next is, if a woman is using a copper tea, will it help in protecting her from sexually transmitted disease? The other question we will see the important and the option type questions. A sexual reproduction takes place through budding in. Which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings? The another contents. Question number 4 to 11. Most are the questions important. What are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? Question number 5. What are the functions performed by the testes in human beings? Question number 6. Why does menstruation occur? Question number 7. Draw a level diagram of the longitudinal section of a flower. Question number 8. What are the different methods of contraception? Question number 9. How are the modes for reproduction different in unicellular and multicellular organism? Question number 10. How does reproduction help in providing stability to population of species? Question number 11. What could be the reason for adopting contraceptive methods? Now, students, we will see the important questions of chapter number 8. Chapter number 8, heredity.
The topic is accumulation of variation during reproduction. Yes, important question. Now tick mark with blue. How does the creation of variations in a species promote survival? Heredity, topic, inherited traits, rules for the inheritance of traits, Mendel's contributions. Gregor John Mendel, very famous scientist. How do these traits get expressed? Sex determination. Yes, important questions. Take out your first the red pen. How do Mendel's experiments show that traits may be dominant or recessive? The second question, how do Mendel's experiments show that traits are inherited independently? Question number four, how is the sex of the child determined in human beings? Option number question. A Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plants bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers. The progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. And question number four, how is the equal genetic contribution of male and female parents? How is the equal genetic contribution of male and female parents ensured in the progeny? Now, students, we will see the chapter number 9's important questions. Now, from the chapter number 9, physics chapters have started. Light reflection and refraction. Reflection and refraction. Very, very important chapter. Reflection of light, spherical mirrors, topics, very, very important topics. These are image formation by spherical mirrors, representation of images formed by spherical mirrors using ray diagram. Image formation by concave mirror, usage of concave mirrors, image formation by a convex mirror. These are the important table. Yes. Define the principal focus of a concave mirror. Important question. The radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? स्टूडेंट्स, ये जो सम्स आते हैं फिजिक्स के, इसको करना बहुत ज़रूरी भी है. अच्छे सम्स होते हैं, बहुत ही ईजी भी होते हैं. बस क्या है कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इसमें ना. क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? Mirror formula and magnification, important. Magnifications formula, remember in your mind. Example number 9.1. Yes, example 9.2 is very important. An object 4.0 centimeter in size is placed at 25.0 centimeter in front of a concave mirror. Question now, yes, question number 1. Find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter. Important. Second question भी important होगा इसका. A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Reflection of light important topic है. Refraction through a rectangular glass slab. The refractive index. Important table. Questions, important questions. A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Question number 2. Light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? जो रेड्स हैं वो तो ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना. यू आर गिवन केरोसिन, टार्पिन एंड वाटर. इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल्स फास्ट? यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 9.3. Question number 5. The refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? Refraction by spherical lenses. Image formation by lenses.
This is very important table. Important table. Image formation in lenses using ray diagrams. Sign convention for spherical lenses, lens formula and magnification. Magnification. Example 9.3 is very important. सम से सवाल है, कर लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है ना। कई बार क्या है, जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको देखकर हमको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, या सम देख कर ही डर जाते हैं स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है, आपको करना है अच्छे तरीके से। बाकी कुछ लोगों को तो काफ़ी अच्छे लगते हैं सम्स करना, तो वो अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कई बार थ्योरी क्वेश्चन उनसे नहीं बनता है, तो वो इस क्वेश्चंस को, जो मैथमेटिकल क्वेश्चन बन आता है फिजिक्स टाइप का, तो उसको कर लेते हैं। 9.4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पावर ऑफ अ लेंस। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। Question number 2, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeters from it. Question number 3, find the power of a concave lens of a focal length 2 meter. Yes, important objectives. Which one of the following materials cannot be used to make a lens? The image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? Question number 3, where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? Question number 4, a spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of. Question number 5, question number 6 important. Question number 7, we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of a focal length. मतलब सम्स है, क्वेश्चन है, इस सवाल को कर लीजिएगा। Question number 8, name the type of mirror used in following situation. Headlights of a car, side rear view mirror of a vehicle, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 9, one half of a convex lens is converted with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट, ये सम्स है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। Question number 11, a concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object? Question number 12, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. Question number 13, the magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? Question number 14 पे एक सम्स है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 पे भी सम्स है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 पे फाइंड द लोकल focal length of a lens of power -2.0 diopter. What type of lens in this is this? A doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Now students, we will see the next chapter's important question. Yes, the human eye and the colorful world. Very important chapter of physics, the human eye. It's very important diagram, practice of it. Power of accommodation. Defects of vision and their correction. Myopia, important topic. Hypermetropia, important topic. Presbyopia. Yes, important questions. Tick mark fast. Take out your blue and track pen. What is meant by power of accommodation of the eye? A person with a myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meter distinctly. What should be the type of corrective lens used to restore proper? What are the 4-point and near point of the human eye with normal vision? Question number 4, a student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. What could be the defect the child is suffering from? With this, don't forget to subscribe my YouTube channel, Summer English World. If you want all
All chapters important questions with English subject. Reflection of light through a prism, important topic. Dispersion of white light by a glass prism. Atmospheric refraction, twinkling of stars, important point, important topic. Advanced sunrise and delayed sunset. Scattering of light, yes, important topic. Tyndall effect, very important topic. Why the color of the clear sky blue? Objective type questions, first, second, third, fourth, important, and red tick mark questions, very, very important. Question number 6, 7, question number 8. Why is a normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 centimeter? Question number 10. Why do stars twinkle? Question number 12. Why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? Okay, now students, we will see the next chapter's important question, chapter number 11. Chapter number 11, electricity, important, electric current and circuit, important topic. Example number 11.1, very important. Question number 1, what does an electric circuit mean? Number 2, define the unit of current. Number 3, calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. These are very, very important questions. Electric potential and potential difference. Question number, example 11.2 is very important. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt. Name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. What is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? Circuit diagram. These are very very important components and symbols. इनको माइंड में बिल्कुल सेट करिएगा क्या कंपोनेंट्स से क्या क्या सिंबल्स होते हैं एन इलेक्ट्रिक सेल का, अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, प्लग की और स्विच, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस आर, ओम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही मत है ना, कर लीजिएगा इसे. Factors on which the resistance of a conductor depends. Now important table. Question number 11 point, example number 11.3 important students. इसे कर लीजिएगा, important है ये, इसका सवाल बनता है ना. 11.6, now important question. Yes, these are important questions. On what factors does the resistance of a conductor depend? Question number 2, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Let the resistance of an electrical component. Question number 3, important है. Question number 4, why are coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? Question number 5 में भी 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके. Which among iron and mercury is a better conductor? Which material is the best conductor? Resistance of a system of resistors. Resistors in series. Example number 11.7 important question है स्टूडेंट्स ये. Draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each. Question number first and second. First ज़्यादा important है इसमें.
एग्जाम्पल 11.8 आपका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इजी सम्स है, बस करनी प्रैक्टिस करना चाहिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11.9 इम्पॉर्टेंट है ये, बस फॉर्मूले में पुट करना है, वैल्यूज और आंसर्स निकालना है इनके। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, yes, question number 3, what are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? Question number 4, how can three resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? What is the highest, the lowest total resistance that can be secured by a combination of four coils of heating effect of electric current? क्वेश्चन नंबर 11.11, यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सम्स। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट कर लीजिएगा, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज? क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर टॉपिक, एग्जाम्पल 11.12 इंपॉर्टेंट है, 11.13 भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। Important question, what determines the rate at which energy is delivered by a current? An electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours. Important objectives, first, second, third, fourth, fifth and sixth number question. Number 8, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 ampere in the circuit. Question number 11 and question number 14 are important questions of sums. Question number 15, two lamps, one rated 100 watt at 220 volt. And question number 16 and question number 18, all questions are very important. Okay. Now students, we will see the next chapter's important question. Important chapter, magnetic effects of electric current based on magnetic field and field lines. Important topic, important question, why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? Magnetic field due to a current carrying conductor. Magnetic field due to current through a straight conductor. Right hand thumb rule questions. Draw magnetic field lines around a bar magnet. Question number 2, list the properties of magnetic field lines. Number 3, why don't two magnetic field lines intersect each other? Magnetic field due to a current in a solenoid. Yes. Question number 2 important. The magnetic field in a given region is uniform. Draw a diagram to represent it. Question number 2 is also important. Choose the correct options. The magnetic field inside a long straight solenoid carrying current. Example number 12.2 important है. And question number 1, which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? Question number 2 and question number 3 भी important है. Magnetism in medicine, domestic electric currents. Question number first and third, name two safety measures commonly used in electric circuits and appliances. Question number 3, what precautions should be taken to avoid the overloading of domestic electric circuits? Important objective question, question number first. Question number 4, list two methods of producing magnetic fields. Question number 5, when is the force experienced by a current
carrying conductor placed in a magnetic field largest. Question number 8, when does an electric short circuit occur? And question number 9, very important, what is the function of an earth wire? Why is it necessary to earth metallic appliances? Now student, we will see the next chapter's important question, the last chapter. Our last chapter is our environment related to EVS chapter, ecosystem, what are its components, important topic, food chains and webs. Yes, important question. What are trophic levels? Give an example of a food chain and state the different trophic levels in it. Question number 2, what is the role of decomposers in the ecosystem? How do our activities affect the environment, ozone layer and how it is getting depleted? Managing the garbage we produce. Now, important question, why are some substances biodegradable and some not biodegradable? Question number 2, give any two ways in which biodegradable substances would affect the environment. Question number 3, give any two ways in which non-biodegradable substance would affect the environment. Disposable cups in trains. Two important questions. इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है. What is ozone and how does it affect any ecosystem? Question number 2, how can you help in reducing the problem of waste disposal? Give any two methods. Important objectives. इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ओके, what will happen if we kill all the organism in one trophic level? Question number 7, what are the problems caused by the non-biodegradable waste that we generate? Question number 8, if all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? Question number 9, why is damage to the ozone layer a cause for concern? What steps are being taken to limit this damage? With this, students, subscribe these channels also. With this, students, subscribe these channels also, some are English world, some are maths world, some are education world. Thanks for watching this video, everyone. Best of luck for your exam.